तो टाइम हो चुका है सुबह के 5:45 और अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है ब्राज़ील एंड मोरक्को का। एज अ फैन ऑफ अर्जेंटीना फ्रॉम चाइल्डहुड, आई डोंट नो हाउ टू से दिस दैट अभी मुझे खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है और वो व्हाटएवर दे दैट ब्राज़ील हैव जस्ट ड्रॉड देयर फर्स्ट मैच एंड टू बी ऑनेस्ट इट माइट नॉट अफेक्ट देम बिकॉज हेइटी है एंड स्कॉटलैंड है। Scotland is a good team and Haiti को तो इवॉल्व नो सो आई आई थिंक मैनेज कर लेंगे वो लोग बाद में जाके। बट बात ना वैसे नहीं करेंगे, बात करते हैं एज अ इंडिविजुअल फुटबॉल फैन। ओके, इंडिया में रात को 3:30 बजे मैच था एंड ऑल ऑफ अस वर वाचिंग ऑब्वियसली क्योंकि यू नो after 2 matches it was the first heavyweight game you can say like आप कह सकते हो कि दो बिग टीम्स का मैच था क्योंकि लास्ट ईयर मोरक्को वाज द डार्क हॉर्स बट दिस ईयर दे आर नॉट, दे आर प्रोबेबली 7th इन द वर्ल्ड रैंकिंग। पर बात क्या है ना कि आप ब्राज़ील हो, लोगों को आपसे उम्मीद है, आपके मैच देखने बैठते हैं तो ऐसा परफॉर्मेंस होगा, ऐसा मैचेस देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद रहता है आपके फैंस को, लोगों को। अब आपका पहले मैच पे एक लड़का आता है 18-19 साल का आयु बुआरी एंड ही रन्स डाउन द होल मिडफील्ड, the whole midfield of Brazil. There was Casemiro, there was Bruno Guimaraes, there was Paqueta, even Rafinha was playing here and there. I don't know, LM sometimes cutting inside and all those. whole लड़का खेलता है and your whole midfield just right. तो प्रॉब्लम यही है, आप जब नेशनल के लिए खेलते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ल्ड कप पे खेलते हो, यू हैव टू शो दैट थिंग, राइट, दैट हंगर समटाइम्स, दैट एंगर, वो जो आता है ना वो पहले ही मैच से आना चाहिए। ऐसे आप बोल नहीं सकते ना कि पहला मैच है बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि every moment matters here, right? Every scores matters, every goals matters, everything. And in my opinion, to be honest, it was not only the players. From the very beginning, I think the problem started from Carlo Ancelotti's his squad picking, player choosing, all those things. क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप पे आप जो जो परफॉर्म करते हैं आप उनको चांस देते हो। अभी कुछ प्लेयर्स ड्रॉप आउट थे एंड विथ ऑल द रिस्पेक्ट टू इवर थियागो, जो बंदा शायद कितने 20 गोल मार चुके प्रीमियर लीग पे, तो वो प्लेयर आता है, आप चूज़ करते हो, ऑब्वियसली ऑल गुड, बट द प्रॉब्लम इज हियर इन दिस मैच वो प्रेस नहीं करता, वो उसका पोजीशनिंग क्या था आई डोंट नो ऑनेस्टली, एंड ये सब मैटर करता है। आप एटलीस्ट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स लाइक मोरक्को, दे रन, ब्राहिम डियाज runs, Abde runs, those midfields also runs। तो प्रॉब्लम इज जब आपका सामने वाला टीम प्रेस करता है और भागता है, उन लोगों के पास हकीमी है, उनका डिफेंस भी भागता है शायद, हाँ डिफेंस थोड़ा वीक था, और इसी बात पे आते हैं डिफेंस थोड़ा वीक था उनका। बैकलाइन आप अब अगर देखोगे तो उनका कोई हकीमी छोड़ के और उतना ज़्यादा लेवल का कोई आप हम जैसे सोचते हैं वैसा कोई प्लेयर है नहीं ना। मज़ारावी आयक्स में शायद था, मैन्यू में थोड़ा बहुत इधर उधर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट यू नो through the years his forms has eventually dropped to some level. So you know when you have attackers like Rafinha, Vinicius Junior, obviously Vinicius Junior's goal was terrific, but that was an individual brilliance moment. Apart from that,
You didn't capitalize any moment. You didn't create that much threat, right? एंड जितना कुछ भी क्रिएट हुआ वो कैपिटलाइज नहीं हुआ. ऑन द अदर साइड मोरक्को प्रेस्ड बेटर, मोरक्को रन बेटर, फाइनल थर्ड में चांस क्रिएशन उनका अच्छा था एंड ऑल दोस थिंग्स. उनका भी कैपिटलाइज नहीं हुआ. लास्ट मोमेंट पे एलिसन का एक सेफ था, ऑल दोज थिंग्स. बट द मेन थिंग इज मिडफील्ड्स रन्स अ शो. स्ट्राइकर इज इम्पॉर्टेंट. आप अभी देखो, Joao Pedro cannot be dropped. It was I don't know. It was a banter for me from the very beginning. And जब squad release हुआ and he was not in the squad. I know Chelsea has gone through some difficult phases. भी आप Chelsea की बात करोगे ना और उनके players के बारे में बात करोगे तो कौन आता है? कोल पामा, एंजो फर्नांडिस, दोज आर द बिग टू नेम्स, राइट? पेड्रो नेटो, ऑल दोज प्लेयर्स. बट alongside them, what's the big name? Joao Pedro. And he was a terrific man throughout the season for them. जो भी good moments था, जो भी मतलब creation था goals का, और in all those things, most of the cases, there was this man. You can't ignore that. Obviously, Igor Thiago made a better impact at Brentford, but that doesn't mean Joao Pedro didn't. And in this kind of matches, I think Joao Pedro is a better suit. क्योंकि देखो, he is young, of course, rather than Igor Thiago. He is young and he can run. वो बंदा भाग सकता है, बंदा प्रेस कर सकता है. He can drop back and hold the ball, then played with the wingers and all those things. तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है. एंड ऑफ कोर्स आप एंड्रिक को स्टार्ट नहीं करोगे बिकॉज ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ, ही इज़ honestly he is not a central forward. So Endrick is more of a striker as a number 9, right? So and of course it was your first match, you would prefer a bit of experience like Igor Thiago, and obviously he was the only option apart from Endrick. I don't know what was Carlo thinking, Carlo Chacha का जो midfield था. Basically, it was a two-man midfield of Casemiro and Guimaraes. Because Paqueta, in my opinion, was more of a up-front player rather than he was holding the ball or creating the play for the forwards. Honestly, and वहाँ जाके वो थोड़ा backfire किया and. फिर Rafinha switches wings with Vinicius. Vinicius was going up front. ये सब चीज़ें तो हुआ, बट ये सब चीज़ें ही मैटर कर गया, Brahim Diaz was good in my opinion, averagely good, not extraordinary, but it was enough for them. But in the middle of these big names, हम आयुवादी को नहीं भूलेंगे क्योंकि he was the main man in fact for Morocco and just 18 years old. Interesting fact is बंदा खेल चुका है फ्रांस के यूथ के लिए and he switches his nationality weeks before World Cup, I guess, and he got the chance in the Moroccan nationality and he mattered. Actually he mattered. And Vinicius का individual performance था थोड़ा बहुत, goals was all about him because but I praise him, but that was a moment for Moroccan defense also because Hakimi was up front and he couldn't track back in time, out of position था I guess. तो ये सब चीज़ें हुआ. In my opinion, Brazil was a bit of lucky, right? And they should improve, man. They should, because
जितना भी बोल लूँ कि हाँ ब्राज़ील ड्रॉ किया, ब्राज़ील हार गया, बट वर्ल्ड कप रहेगा ही कहाँ अगर यू नो in all these teams like them eventually drop a stinkers and they drops out, right? So आज का मैच स्टिंकर नहीं था, but as you all know अच्छा भी नहीं था. In the opinion of a neutral football fan, maybe yeah, maybe I enjoyed, maybe could have enjoyed more. Who knows? But Brazil man, Carlos Chacha, work on your theories with your players, because you know, against Scotland it can be a bit of toughness there, right? Scott McTominay, McGinn, Billy Gilmore, all these players वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी देखो हाइती का मैच है उनके साथ एंड ऑफ कोर्स वो जीतेंगे, ऑफ कोर्स, इफ समथिंग मिरेकुलस won't happen, they will win. एंड आप ड्रॉ कर रहे हो और आपके ओपोनेंट के पास एक 3 पॉइंट का एडवांटेज है, राइट? बिकॉज दे विल लुक फॉरवर्ड टू एवरी मैच एज इम्पॉर्टेंट. आई मीन जैसे सेम इम्पॉर्टेंट है ना उनको एवरी मैच का, क्योंकि नेक्स्ट तो मैच ब्राज़ील और मोरक्को के अगेंस्ट है. वो लोग बोल नहीं सकते कि ये मैच ड्रॉ कर ले वो मैच जीत जाएंगे, नॉट लाइक दैट. सो उनका एफर्ट्स 100% रहेगा, तो आपका भी रहना चाहिए कि अगर आप यू नो उतना भागोगे नहीं, ज़्यादा टेक्निकल सोचोगे, ज़्यादा यू नो एनालाइज करने बैठोगे इन द मिडिल ऑफ द पिच, दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड कप वर्क्स. आई थिंक मोमेंटम मैटर करता है. इन द मोमेंट आप कितने जोश में हो, कितना आपका दिमाग चल रहा है, आप कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन में हो आपका, ये भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन मैन. ब्राज़ील इज जोगा bonito, but it's not all about that. Football is not all about just skills, right? So yeah, let's hope good for them, our rivals obviously, but yeah, we hope good matches from you, and we hope to see in the next upcoming matches. See, peace.